हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुनेश्वर कलिता आपको मेरे यूट्यूब चैनल गुनेश्वर कलिता ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। साथों साथ मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको कहूँगा। और आप मेरे दूसरा वीडियो नहीं देखा तो देखने के लिए भी मैं आपको विनती करूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे वॉइस का ऊपर वीडियो पार्ट 6 है। So students, today I am going to discuss voice active and passive part 6 based on past perfect tense. So students, 6 number past perfect. Number A, she had completed the work active voice. इसमें she subject had completed verb का past participle had completed in perfect tense. The work is object here. So first of all, सबसे पहले object को हम लोग subject करना है. First of all, we'll make the object subject. So the work, here the work became object, but in passive form the work becomes subject. Then student, as she was subject here, after she had completed. So after the work also had been completed. Had been is added in place of had. In place of had been is used in perfect tense passive form. So students, the work had been completed by her. So she was the subject and it became object being her, following the preposition by. So students, ये passive voice है. Next, number B, my uncle had sold the house last year. Active voice. My uncle is the subject, had sold verb, the house object, last year additional part. So first of all, ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाना है. वी आर टू मेक द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट. सो द हाउस देन हैड बीन सोल्ड फॉर द पैसिव. हैड बीन इज यूज्ड. हैड बीन सोल्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. दिस वन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट पार्टिसिपल. So the house had been sold by my uncle. My uncle was the subject, so it became object following the preposition by. By preposition के बाद my uncle subject object हो गया. Last year was the additional part. Here also it became the additional part. Next, number C, had you boiled all the vegetables. एक्टिव वॉइस. सो स्टूडेंट्स, हम लोग इसको ऐसे सोचना चाहिए, यू हैड बॉइल्ड ऑल द वेजिटेबल्स. यदि ये ऐसे होता तो हम लोग लिखना पड़ता कि इसे यू हैड बॉइल्ड ऑल द वेजिटेबल्स. ऑल द वेजिटेबल्स हैड बीन बॉइल्ड बाय यू. बट इसमें क्या है, हैड पहले यूज किया गया है एज द क्वेश्चन ऑफ इंटरोगेशन. ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस में. सो पैसिव वॉइस में भी इंटरोगेटिव हम लोग करना होगा और उसी का हिसाब से हैड पहले आ गया. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया. ऑलरेडी वी हैव मेक द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाय फॉलोइंग द हैड फर्स्ट. पहले हम लोग हैड को लिखा है. हैड ऑल द वेजिटेबल्स बीन बॉइल्ड बाय यू. सो had been boiled, ये verb है, verb का part है. subject all the vegetables है by preposition and you first subject है, अभी object हो गया. this time it becomes object. So once again, completely the passive form, had all the vegetables been boiled by you. ये passive form है, ये active form था. Next students, question number 1. Fill in the blanks with the passive form
of verbs in the past perfect tense. Number A. He made sure the packet dash on time. Within bracket deliver. इसमें verb deliver है. So इसका पैसिव फॉर्म है, ये तो एक्टिव फॉर्म है और पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको पैसिव बनना है. वी आर टू मेक दिस सेंटेंस पैसिव ऑन पास्ट परफेक्ट टेंस. सो इसका आंसर होगा ही मेड श्योर द पैकेट हैड बीन डिलीवर्ड ऑन टाइम. ये पैसिव हो गया. नेक्स्ट नंबर बी. वी थॉट द प्लान डैश ड्रॉप. वी थॉट द प्लान हैड बीन ड्रॉप्ड. पैसिव है. नेक्स्ट नंबर सी. द प्ले डैश इन द ऑडिटोरियम. प्रेजेंट विदिन ब्रैकेट प्रेजेंट. प्रेजेंट वर्ब है. सो पैसिव वॉइस में होगा द प्ले हैड बीन प्रेजेंटेड इन द ऑडिटोरियम. नेक्स्ट नंबर डी. द वॉल डैश पेंट. विदिन ब्रैकेट पेंट. पेंट वर्ब है. सो पैसिव वॉइस में होगा, ये तो एक्टिव वॉइस में था, एक्टिव. पैसिव वॉइस में होगा द वॉल हैड बीन पेंटेड. द वॉल डैश पेंट. द वॉल हैड बीन पेंटेड. पैसिव वॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. रीराइट दीज सेंटेंसेस इनटू पैसिव. नीचे दिया गया सेंटेंस को पैसिव करना है. ए नंबर. फादर had advised me to carry a torch as it was dark inside. Active voice. So इनका passive voice होगा I had been advised by father to carry a torch as it was dark inside. Passive हो गया. So I had been advised by father to carry a torch as it was dark inside. Next students, number B. Had you taken many woolens to the hill station? Active voice है. You subject. Had taken verb past participle perfect form में. Many woolens object to the hill station additional part. Question mark. So active voice. So passive voice में होगा in passive voice had many woolens been taken to the hill station. Next number C. His friend had explained the theorem clearly. Active voice. His friend subject, had explained verb, the theorem object. Clearly additional part. Next in passive voice ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट करना है. द थ्योरम वॉज द ऑब्जेक्ट, इट बिकेम सब्जेक्ट हियर. द थ्योरम हैड बीन एक्सप्लेन्ड क्लियरली बाय हिज फ्रेंड. ये बाय प्रीपोजिशन है. थ्योरम सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन एक्सप्लेन वर्ब है एंड हिज फ्रेंड ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट नंबर डी. आई हैड पॉलिश द शूज एट नाइट. एक्टिव वॉइस. आई सब्जेक्ट, हैड पॉलिश वर्ब, द शूज ऑब्जेक्ट. सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा. द शूज सब्जेक्ट, हैड बीन पॉलिश्ड वर्ब, बाय मी, बाय प्रीपोजिशन, मी ऑब्जेक्ट, एट नाइट. दिस इज द एडिशनल पार्ट.